Sir, you are live. Hi, good evening, everybody. बच्चों, good evening. Good evening, all. How are you all? बताओ, मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है आपको? Yes, I am fine. I am fine as well. है ना? Yes, मेरी वॉइस आ रही है सबको? बताइए क्लियरली. Are you all able to get me? All right, all right. Let's start. Let's start. Let's start. Okay. So बताओ ये कौन है? इसको देखो, ये कौन है? आज ये आया है आपसे मिलने. कौन है बताओ इसका नाम? ये कौन है बच्चों? देखो तो. ये बोला आज आज क्लास करेगा. कौन है बताओ, इसका नाम बताओ. ये टॉमी है ना? ये आज आज आपके साथ क्लास करेगा. इसका नाम टॉमी है. मैंने बोला क्यों आए हो इधर? तो ये आया है इधर क्लास करने. चलो इसको मैं बिठा देता हूँ यहाँ पर. ऑलराइट, ये यहीं बैठ के क्लास करेगा. है ना? चलो स्टार्ट करें हम लोग. बताओ. हाँ, माना ही नहीं आज. ये काऊ नहीं है. कौन बोला काऊ? निरंजन, ये काऊ नहीं है. देखो अच्छे से, ये पपी है. ये डॉग है. इसका पपी यहाँ पर है, देखो. ये देखो, ये है. हम्म, ये एक और है. ये ये पपी है. ये दोनों बैठ के आज यहाँ पर क्लास करेंगे. ठीक है? और जो आज सबसे अच्छा आंसर देगा उसको ये डॉग मिलेगा. है ना? चलो स्टार्ट करें. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, चलो. फर्स्ट वन देखो. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. हम्म. यस, लेट्स स्टार्ट. मधुस्मिता. यस. दीप्तिमयी इज देयर. रिजवाना इज देयर. विवेक. हम्म. चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ टेल मी, दिस इज एन एरोप्लेन. यही ना? दिस इज एन एरोप्लेन. करेक्ट. दिस इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है बताओ? मतलब इन ओल्डन डेज, यू सी, यहाँ मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अदर जाने के लिए लोगों को ना, दे यूज टू, दे नीडेड सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके. सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज रिक्वायर्ड फॉर टू रीजंस. नंबर वन, एक हो गया, नंबर वन फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट. और नंबर टू हो गया ट्रांसपोर्टेशन. मूवमेंट इन द सेंस पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. ओके, आप देखो अभी यू हैव आपके यू हैव वेकेशन राइट नाउ, राइट? तो आप कहीं, यू नीड टू ट्रैवल टू सम हिल स्टेशन और एनी अदर प्लेस. ओके, यू मीन, ऑलराइट, यू नीड टू ट्रांसपोर्ट वन गुड्स टू वन प्लेस टू अदर. ओके, गुड्स भी तो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, राइट? नागपुर, देखो नागपुर,
नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। अब ऑरेंज खाने के लिए हम लोग नागपुर तो नहीं जाते ना, तो नागपुर से ऑरेंज क्या होते हैं, ट्रक में आते हैं। हम्म। और व्हाट एल्स यू सी, नासिक, नासिक, नासिक इज फेमस फॉर अनियन। अगेन अनियन वहां से यहाँ ट्रांसपोर्ट होके आते हैं। ओके, सो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट वन इज दिस एरोप्लेन, यू सी, air transport is the fastest method of transportation. Air one is the fastest method. Okay, kabhi if somebody asks you which is the fastest mode of transportation, remember it is the air transport. Correct, air transport is the fastest one as compared to others. All right, this is the first one. Then you see next mode of transportation, this one, you see, people in the hilly regions. करेक्ट, जो पहाड़ी एरियाज होते हैं ना, जहां पर पहाड़, ऐसे पहाड़ होते हैं, राइट, तो पीपल यूज टू टेक दीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड टू एंड फ्रो, ऑलराइट, बाय देयर ओन बैक। ओके, so this is one of the other transportation means in hilly regions. This is human powered transport, is the transport of people or goods using human muscle power in the form of walking, running, swimming. Okay, so this is one other way to take goods from one place to other. Okay, बताओ मुझे कोई यहाँ गए हो आप लोग, कोई वैष्णो देवी गए हो क्या, बताओ। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी गए हैं आप लोग कोई, वैष्णो देवी या तो केदारनाथ, राइट। इफ यू आर नॉट एबल टू वॉक टू दैट हिली रीजन, मतलब वो पहाड़ के ऊपर ही तो है ना ये सारे। Okay, these are, up in the hill. Okay, so suppose you are here at the bottom of the hill, now you want to go to the topmost place anywhere in the hill. So you may take, people will, they will carry you to that place. Okay, these are called palkis. उनको ना वहां पर पालकी बोलते हैं। करेक्ट, yes, Sunita has gone to Vaishno Devi, Dipti Mai has gone to there, all right. Subhra has also gone there, all right. What I mean to say, now, even nowadays, even in these times, people also used to carry other people on their back. Okay, so this is one other means of transport. Then next one, you see this one, you see what is this one, this is another means of transportation, right? This is called the railways. This is the railways. Nahi bolo, this is the railways. All right, railways, landmass mein railways is faster than the other modes. Okay, yes, this is a train. So rail transport is a means of conveyance of passengers and goods by way of wheeled vehicles running on rail track, known as a railway or railroad. Okay, अब रेल ट्रांसपोर्ट में देखो किस किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। रेल ट्रांसपोर्ट हैज टू साइड्स, एक होता है इसमें गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, गुड्स में कोल हो सकता है, आयरन हो सकता है, और राइट, दूसरा होता है पैसेंजर, राइट। इफ यू हैव गॉन टू वैष्णो देवी, कैसे जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, नहीं, सो पैसेंजर ट्रेन, राइट, पैसेंजर रेलवे ट्रांसपोर्ट। ओके, अनदर वन इज ऑल्सो पैसेंजर में, एक और है जिसको मेट्रो बोलते हैं, मेट्रो। वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव आवर ओन मेट्रो इन भुवनेश्वर, नहीं। So this is a means of conveyance of passengers and goods by way of wheeled vehicles running on rail track. Okay, ये इनके लिए special tracks होते हैं known as railway road or railroad. All right. So this is rail transport. Rail transport is another important and very 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 convenient mean. आपको पता है हमारे जो Indian railways है ना, the Indian railways, Indian railways एक दिन में on a single day it carries crores of people, करोड़ों लोगों को, मतलब estimated around 5 crore लोगों को एक साथ एक दिन में, मतलब they travel on the railways, correct. Then कोई मुझे बता सकता है, बताओ पहली रेलवेज इंडिया में कब चली थी, when was the first railway line or railway in India?
इंडिया में पहली रेलवे कब स्टार्ट हुई थी और कहां से कहां तक? द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज फ्रॉम विच प्लेस एंड इन विच ईयर? एक बार चेक करके मुझे बताइए. ऑल राइट, द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. 1863. Okay, you say 1863. It is 1853. 1853. Okay, the first railway line from Bombay to Thane. The first railway was from Bombay to Thane, and that was in the year 1853. Bombay to Thane. Correct. Yes. 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 Correct answer. All of you. All of you. Subhra is also right. Diptimai. Yes. Rasmi Ranjan. Sasmita is there. Okay. All of you. All right. Acha, next. This one is the roadways. You see, roadways. In May, you see these kind of roadways are called freeways. Okay. Roadways have also different. अलग-अलग तरह के roadway होते हैं ना. मतलब general road होते हैं. Okay. Highways होते हैं. इनको ना freeways बोलते हैं. These are all called freeways. You can see parallelly कितनी कार एक साथ चल रही हैं. How many tracks are there? 1, 2, 3, 4, 5. All right. Parallelly there are 5 tracks. Okay. So that's why these kind of tracks are called freeways. So this is a roadways. Road is a identifiable route of travel, usually surfaced with gravel, asphalt, or concrete, and supporting land passage by foot or by number of vehicles. Okay, so these are roadways, right? So which is the longest roadway in India? Check and tell me. Longest highway in India. Which is the longest highway in India presently? Just check and tell me. Right, it is so nice to see that you are all participating very energetically. It is not NH3, Manoj. It is not NH3. NH3 is not the longest highway in India. All right, somebody check and tell me. NH5, no. NH5, no. NH44, yes. Subhra is got the right answer. NH44. Remember, it is NH44. Correct. NH44. Or earlier it was called NH7. This was earlier called NH7. Now it is NH44. All right. This is the correct answer. NH44, or now it is called NH7. National highways. Then the next mode of transportation. You see, if you have gone to Goa, you will see these kind of transports very frequently. Okay, those are called ferries. Those are called ferry in those regions. Okay, ferries. Waterways. Yes, waterways are very. See, this is the cheapest mode of transportation. This is the cheapest mode of transportation. Correct. है ना, ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता है. Okay, and when this human beings, the human civilization developed, this was the first means of transportation that was to be developed. Okay, so this is the waterways. Water transport is the process of transport that a watercraft such as boat, मतलब पानी के ऊपर आप ये सारे वाटरक्राफ्ट यूज कर सकते हो. जैसे एक हो गया बोट, राइट. दिस इज अ बोट, राइट. BOAT. स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा एरर है. शिप और सेल बोट makes over the body of water such as sea, ocean, lake, canal, river. हाँ, तो ये है, this is a water transport. Okay, water transport, the cheapest one. Correct. Then next one. See this one is another mode of transportation. This is another mode of transportation. Yes, anyone? Yes, this is a pipeline. Niranjan, you are right. You are right. Yes, Priyanshi, Niranjan, yes. This is a pipeline. Yes. Madhu Chanda. I hope these are all your names. हाँ. और कोई मम्मी से पूछ के मत बताना, याद रखो, है ना, वरना ये टॉमी है, देखो यहाँ पर, देखो इसको अच्छे से, ये देख रहा है, काट लेगा. मम्मी से पूछ के मत बताना. ओके, वरना ये काट लेगा पूरा. चलो नेक्स्ट. ये देख रहा है, सबको देख रहा है, कौन कौन मम्मी को पूछ रहे हो. हाँ, चलो. पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट. सो दिस सेंड्स गुड्स थ्रू पाइप
most commonly liquid or gases. That means this is a mode of transport. That means इसमें liquid या तो gases, liquid या तो gases को हम लोग यहाँ से, right, that are sent, but pneumatic tubes can also send solid capsules. Okay, but the point is that ये liquid और solid gases को use कर सकता है. Do you know there is a term called ऊर्जा गंगा. ये आपने कभी सुना है क्या, ऊर्जा गंगा? नाउ यू आर गेटिंग एलपीजी सिलेंडर्स. आपके किचन में ना एलपीजी के सिलेंडर्स हैं, right? But after some time you will see gas connection through pipelines, pipe connection of gases. In some parts of Bhubaneswar it has also happened, it has already happened, but in some other parts it will start, gradually it will be there. Okay, so excluding this LPG cylinders, you will have pipeline connections, right? Yes, pipeline. Yes, Madhuchandra is right. Yes, pipeline at Varanasi. Yes. Okay, so through these pipelines you can transport liquid and gases. Okay, and in some cases slurry is also transported. Slurry in the sense, slurry क्या होता है? Slurry ना वो आयरन और होता है ना, उसको पूरा मतलब एक बहुत ही सेमी लिक्विड कंडीशन में बना देते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. Okay, this is pipeline. Then yes, ever gone to Himachal Pradesh, Uttarakhand, and you have seen this ropeways? Ropeways are very, very popular in these hilly regions. Okay, and the left one I have shown, this is of Switzerland. This ropeway I have shown here, this one is from Switzerland. All right, but आपको रोपवे के लिए बहुत दूर जाना नहीं है. All right, have you gone to नंदनकानन? बताओ मुझे, नंदनकानन कौन गया है बताओ? Who has gone to नंदनकानन? Tell me. Anybody? No sir. अच्छा, पूजा श्री अभी तक नंदनकानन नहीं गए हो? जाओ वेकेशन में एक बार घूम के आओ. ऑलराइट, संजय, स्वतलिना, यस यस, ऑल ऑफ यू. अच्छा, वहां पर ना एक लेक है, उसका नाम बताओ मुझे फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी. आई होप यू मस्ट हैव सीन ए लेक देयर. ऑलराइट, और उस लेक के ऊपर आपने इस तरह का कोई रोपवे देखा होगा. आई गो टू, अच्छा, यस यस, केबल कार, यस, नंदनकानन के ऊपर, राइट, और रोपवे हैज बीन डेवलप्ड देयर, नंदनकानन. सो नाम बताओ लेक का, कौन से लेक के ऊपर यहाँ पर रोपवे चल रही है? यस सर, हम लोग नंदनकानन भी गए, लेकिन लेक भी देखा, लेकिन लेक का नाम नहीं पता है. हाँ, दिस इज द कांजिया लेक. यस, दिस इज द कांजिया लेक. करेक्ट आंसर. मधुचंद्रा has got the right answer. This is the कांजिया लेक. यस, प्रियांशी, यस. जानो एक बार, ये कांजिया बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को पता नहीं है, ये कांजिया लेक है. हमको लगता है लेक तो है, और क्या नहीं. ये सिर्फ लेक नहीं है, ये कांजिया लेक है. ओके, सो दिस इज द रोपवे. सेकंड, the next mode of transportation is a cable transport. Correct, it is a broad class of transport modes that have cables. केबल के थ्रू से एक कार को क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करवाता है. ये इजी है. ये वेयर इट इज needed or where it is used mostly, you see in the regions which are very hilly in nature. All right, in hilly regions there are scarcity of road वहां पर कम होते हैं, and due to लैंडस्लाइड की वजह से फ्रीक्वेंटली द रोड्स गेट्स ब्लॉक्ड और डैमेज्ड. वहां पर ना ये केबल कार काम आती है. राइट, ये इस तरह के केबल कार वहां पर काम आती है. राइट, तो ये केबल कार्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव इन द हिली रीजन्स. ओके, एंड वी हैव वन केबल कार इन भुवनेश्वर. करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज द लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. आप नाम बताओ. दिस इज द लेटेस्ट वन. बताओ, what is this mode of transportation? This is the latest one. All right, there is no one inside this aircraft. Yes, drone. Lavik calls it drone. Yes, Manoj, Lalita, yes, drone. Himanshu, yes, Sunanda is also right. Correct answer, all of you.
All of you got the right answer. This is a drone. All right, isko na, these drones are also called UAVs. Please know this term. What is a UAV? UAV stands for unmanned aerial vehicle. Unmanned aerial vehicle. That means there is no man inside it. There is no human being inside it. It is guided by a device on the ground itself. Correct. So this is an unmanned aerial vehicle. We normally call it a drone. Drone. All right. It's an aircraft without any human pilot. All right. इसमें ह्यूमन पायलट नहीं होते हैं, क्रू नहीं होते हैं, पैसेंजर नहीं होते हैं. ये ड्रोन जो है ना आज के डेट में पता है हाउ दे आर यूज्ड. दे आर यूज्ड टू डिलीवर मेडिसिन्स. दे आर यूज्ड एज एम्बुलेंसेस. दे आर यूज्ड टू कैरी बॉम्ब्स इन मिलिट्री ऑपरेशंस. वहां पर ना बॉम्ब्स वगैरह कैरी करते हैं ये, है ना, डिस्ट्रॉय करने के लिए. ओके. और क्या, दे आर यूज्ड टू कैरी दिस फूड टू डिफरेंट एरियाज. करेक्ट. जहां पर फ्लड आ जाता है वहां पर ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. हाँ, सर्विलेंस के लिए. जो इलेक्शंस चल रहे हैं ना अभी, इलेक्शंस के टाइम में कोई अगर इधर उधर का काम करता है तो दे यूज टू हैव ए क्लियर वॉच ऑन दोज एक्टिविटीज. ओके. चलिए, कोलकाता गए हैं क्या कोई? इफ यू हैव गॉन टू कोलकाता यू मस्ट हैव सीन दिस. टेल मी व्हाट इज इट. टेल मी. ये ट्राम. यस यस, सुभाष्मिता गॉट इट राइट. ट्राम, करेक्ट. मनोज. नर्मदा. ओके. Narmada, you have got a good name. Narmada Parida. Is it your name? Small baby, Narmada Parida. Do you know what is the meaning of Narmada? Narmada is a river in the South India, basically the southern South Central India. Narmada means peace giver. Right? This is also called Narmada. All right. Central India में, ये मध्य प्रदेश में आती है नदी. All right. चलिए. So I hope you have gone to Kolkata. Kolkata is the only place in India where you can see the trams. Correct. Britishers ने इसको introduce किया था. Tram services. Trams are also called street car or trolley. Runs on tramway tracks on urban public streets. Okay, you can see, the vehicles are also moving at the same time. Trams are also moving. All right, on the same road. All right. So some include segments on segregated right of way. Means some tram tracks they have separate ways, but most of them are in line with the normal traffic. Okay. Then this is yet another new mode of transportation, and fast as well. Yes, anybody who can guess ये क्या है? Yes, metro train. अच्छा, metro तो है नहीं है. No, it is not a metro. I must tell you, this is not a metro. This is not a bullet train as well. This is not a bullet train as well. नहीं, मैं ही बता देता हूँ. चलो, बुलेट भी नहीं है. This is called a maglev. This is called a maglev. See it on the screen. See it on the screen. This is a maglev. All right. इसको बोलते हैं magnetic levitation. Magnetic levitation. Okay. Maglev. This is another kind of a train. You just see the image again. All right. How it looks. It looks like this. When the train, this is at rest right now. Okay. When the train starts running, then the track. This one is the track. All right. The train is designed in such a way that it lifts up itself. Okay, that means as if it is running in vacuum. Okay, so that's why these are ultra speed trains. These are ultra speed trains. All right, these are magnetic levitation trains. That means they run on the principle of magnets. Okay, magnetic levitation.
So this is a system of rail transport whose rolling stock is levitated by electromagnets rather than rolled on wheel. They do not have wheels as such. Eliminating the rolling resistance. मतलब इसमें resistance तो कम होता है, इसलिए क्या होता है कि ये मतलब बहुत स्पीड जाती है, बहुत ज्यादा स्पीड. Okay. Then this is another medium of transportation. You see this? This one. Yes. Anyone who can guess it? ये है क्या? Yes. This one. Any guesses? Memo train. Okay. This is not a memo train. No, it's not a tram as well. This is not a tram as well. Guess करो ये क्या है? ये भी. This is also a new mode of transportation. Okay. नहीं, this is not a memo train. This is not a memo train. It's not a capsule as well. Right? Magbus. Okay. All right. Let me tell you. This is a personal rapid transit system. All right. Or in general, you can call it a pod car. This is a pod car. Remember, ये क्या है? इसको बोलते हैं pod car. You see, it is written here. It's a pod car. Or guided rail taxi is a public transport mode featuring small, low capacity automated vehicle. इसमें क्या होता है ना, बहुत ज्यादा लोग नहीं जा सकते. Very restricted number of people can travel through it. इसको pod car बोलते हैं. बहुत ही पॉपुलरली इसको pod car बोलते हैं. सी डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेशन है ना, इसमें मैंने बहुत सारे तरह के ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स को इंक्लूड किया हुआ है. ओके. those who are which are known to you and those which are not. Okay, so just know them. Then this is the state of the art technology. Yes, this one is called what? Bhavya has a doubt in this train. Okay, tell me, Bhavya. Itisri saying that tram ride is so beautiful. Yes, of course. You go to Kolkata, you have a tram ride. So that is so beautiful. Yes, hyperloop. Yes, Manoj is right. Manoj is right. This is a hyperloop. Correct. This is a hyperloop. Exactly. He's right. Manoj got the right answer. So what is a hyperloop? Hyperloop is a proposed high-speed transportation system. It is a proposed one, all right, for the both passengers and freight. मतलब इसमें क्या करते हैं ना, एक एक बैरल होता है, उसके अंदर ना वैक्यूम होता है. वैक्यूम मतलब उसमें से एयर को निकाल लेते हैं पूरा. ओके. उसके बाद जो ये जो कैप्सूल उसमें चलता है ना, राइट, ये बहुत ही फास्ट जा सकता है, मतलब एज इफ इट इज ट्रैवलिंग इन द एयर. ओके. एंड इट वाज द concept was documented by Elon Musk. So this was a concept of a hyperloop. It is a proposed one only because you see बहुत सारा पैसा लगता है. Bhavya, tell me what to explain. Bhavya, just tell me what to explain again. I'm not getting you. Pod car. Okay. Bhavya, what is a pod car? I tell you, pod car is basically like you have the taxis and your cars as people keep them. Pod car is a public mode of transportation. All right, but a very small number of people they can travel through it. ये हमारे इंडिया में अभी आया नहीं है. Okay. Then next you see, this is the end. All right, these are all the mode of transportation that you have to see. Okay. चलो, let me share another document. Transportation तक गया. Next let's talk about means of communication. Okay, we have two things that we have to discuss today. एक हो गया means of transportation, दूसरा हो गया means of communication. I hope you can see it now. It is on the screen. All right, you see modes of
communication. Okay, let's start with it. Modes of communication. Both the topics, you see, both the topics are interesting. All right, this is a telephone. As you can see, who invented the telephone? Who can tell me? Who invented telephone? Who invented telephone? बच्चों, आप जिस एज में मतलब पैदा हुए हो ना, you have taken birth in such a age where you have started your life with smartphones. Okay, you are in standard 1 2 right now, right? So you have started your life with smartphones. Very few of you have seen these kind of phones. All right, these are landline telephones. Okay, so who invented it? It was Graham Bell. Graham Bell invented this telephone. This was such a big invention, all right, for communication. Correct. So आपको पता है? Do you know one thing? Who introduced these telephones in India? He was Lord. He was याद करिए थोड़ा, कौन थे? लॉर्ड डलहौजी. He was Lord Dalhousie. Lord Dalhousie introduced this telephone in India. Okay, there is such a big contribution by him. Then, you see, telephone is a telecommunication device that permits two or more users to conduct a conversation when they are too far apart. Okay, आपको एक और चीज पता है? 1995 में, the year was 1995 when Nokia started, wireless communication. है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आज के डेट में? मोबाइल बोलते हैं. मोबाइल 95 में वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया. ओके, चलो नेक्स्ट. ये व्हाट इज दिस ऑन योर स्क्रीन? यस, nowadays you have e-books, not normal books. You can also access the e-books. All right, those are different from tabs. All right, e-books are different from tabs. Yes, is it a mobile? No, it's not a mobile phone. I guess it is not a mobile phone. It is a smartphone. Yes, it's a smartphone, or simply called phone, is a mobile device that combines the functionality of traditional mobile and advanced computing. Smartphone क्या होता है? आप देखो ना, smartphone में क्या क्या कर सकते हो आप. You have so many options. All right. Bachcho, sorry for the interruption. There's something to be announced right now. All right, tomorrow, listen to me carefully, huh? I hope I'm audible to you. Tomorrow you will have a a spoken English class, a demo class. Let me write it. Tomorrow you will have a spoken English demo class. All right, यही पे लिख देता हूँ. Correct. So spoken English का demo class रहेगा कल 8:15 to 9:15. Spoken English
Demo class. What is the time tomorrow? Tomorrow, what is the time? It is from 8:15 to 9:15 p.m. Of course, in the evening. All right. We'll have good faculties, excellent faculties in their fields. All right. They will train you in this regard. So do join. All right. This is just a simple reminder and a message to all of you. Please join that in tomorrow's session. Okay. तो आप जो स्पोकन इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसमें आप ज्वाइन करो. यू विल गेट सो मेनी थिंग्स इन दैट. ऑलराइट. चलिए. सो लेट अस कंटिन्यू. दिस वन इज अ स्मार्टफोन. दिस वन इज अ स्मार्टफोन. ओके. चलो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखो एक बार. नेक्स्ट ये क्या है? व्हाट इज दिस? यस, कैन यू गेस इट? ये क्या है? दिस इज अ टैबलेट कंप्यूटर. This is a tablet computer. Okay, you might get confused. So this is a bit bigger. Okay, this is a tablet computer, commonly shortened as tablet. It is a mobile device, typically with a mobile operating system. मतलब इसमें either Apple का iOS हो सकता है या तो Android हो सकता है. करेक्ट. मतलब ये मोबाइल जैसा ही होता है लेकिन मोबाइल थोड़ा छोटा होता है. ऑलराइट. this you can carry it from one place to other. Yeah, it has touch screen, everything. All right. Then processing circuitry, then rechargeable battery, a single thin and flat package. Everything is the same, but the thing is that tablet is quite bigger and a smartphone is comparatively smaller. Okay. Then next one, you see. Next one. What is this? What is this? You can see. What is on this table? See. What is that on the table? Is it a? Yes, this is a smart TV. Yes, this is a smart TV, of course. Television. Broadly, television is a medium, mass medium for advertising, entertainment, news, what not. टेलीविजन में क्या क्या हमको दिखता है पता है? टेलीविजन में हर एज के लिए कुछ ना कुछ है. टेलीविजन हैज the content for children, for young people, for students, for old people, है ना, for businessmen, राइट, फॉर सैलरी होल्डर्स. ये सबके लिए टेलीविजन में कुछ ना कुछ है. ऑलराइट. जो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, आईपीएल कैसे देखते हो बताओ? हाँ. सो दिस इज अ स्मार्ट बेसिकली टेलीविजन. ऑलराइट. ओके. नेक्स्ट वाला देखो. ये क्या है? आई होप यू माइट नॉट हैव सीन दिस एनी अदर टाइम. करेक्ट. दिस इज अ टेलीग्राफी. earlier time we used to have telegraphs. Okay, this is a telegraphy, is the long distance transmission of message where the sender uses symbolic codes known to the recipient rather than physical exchange of an object. Okay, मतलब हम लोग आज व्हाट्सएप में मान लो मैंने लिखा हाई. हाई लिखा. करेक्ट. तो मैंने आई रोट हाई फ्रॉम दिस साइड एंड somebody will receive हाई फ्रॉम द अदर साइड. ऑलराइट. लेकिन इन a telegraph what happens, the you know this message is encrypted. मतलब इसको कोडिंग किया जाता है, जिसको ना, हाँ, जिसको मॉर्स कोड बोलते हैं. मॉर्स कोड. ओके. मॉर्स कोड के थ्रू से इसको क्या करते हैं, मतलब सिग्नल को या तो किसी मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं. ऑलराइट. यू सी द नेक्स्ट वन. दिस इज द नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. This is the next mode of communication. The way you are able to see the cricket matches. IPL के matches कैसे देखते हैं हम लोग बताओ? How we are able to see the IPL matches? है ना? How we are able to see the IPL matches? All right. Yes. This is. It's not an antenna. It's Priyanshi. Priyanshi is correct. Bhavya is correct. Bhavya.
sorry, Priyanshi, Bhavya, these are correct answers. All right, yes, this is a satellite. Satellite is also a mode of communication. बच्चों सैटेलाइट में क्या होता है पता है? हम लोग क्या करते हैं एक रॉकेट के थ्रू से, सपोज आपने ऐसा देखा होगा कभी, ये इस तरह से कोई ऐसा एक रॉकेट होता है। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट, मेरी ड्राइंग बहुत खराब होती है ना, ऐसा होता है और ये यहाँ फायर होती है पूरी। ओके, और इसके बगल में भी दो छोटे छोटे रॉकेट होते हैं ना ऐसे। तो ये स्पेस में क्या करता है, सैटेलाइट लेके जाता है। दिस इज अ सैटेलाइट। दिस इज अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिस इज अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये ऊपर ये सैटेलाइट लेके गया। नाउ ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से मान लो अभी मैच कहाँ चल रहा है, सपोज मोटेरा स्टेडियम में मैच चल रहा है। मोटेरा, या तो मोटेरा याद नहीं रहेगा, हम लोग मान लो ईडन गार्डन में मैच चल रहा है। ईडन गार्डन, ईडन गार्डन में आईपीएल चल रहा है अभी। तो ये क्या किया उसने, ब्रॉडकास्ट किया एंड इट सेंड द सिग्नल्स टू द सैटेलाइट। सैटेलाइट इट रिसीव्ड द सिग्नल्स एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। आप यहाँ पर हो, यू आर हियर। Okay, in this way satellites, they send signals and they receive signal. Ultimately they are able to communicate with each other. This is also a mode of communication. Okay, next, see, this is also a mode of communication. Whenever, अच्छा आप फ्लाइट में बैठे हो कभी, बताओ, have you ever been in a flight? एरोप्लेन में बैठे हो सारे? टेल मी एरोप्लेन। Yes, it's of course a tower. Yes, almost every one of you have been any time in the flight. Okay, so ये होता है ना, इसको एटीसी बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये क्या करता है, ये जो फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है ना उसको सिग्नल सेंड करता है, कम्युनिकेट करता है उसके साथ। ओके, दिस इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, ऑफ कोर्स सर्विस प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हु डायरेक्ट एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड। ओके, कि कब एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना है, कब लैंड करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, ये देता है एटीसी। ओके, लाइक यू ट्रैवल ऑन द रोड, यू हैव ट्रैफिक लाइट्स, you have traffic police. So traffic police, how the way he assists the vehicles, who has to move, who has not. Okay, in this way air traffic controller, he actually guides the air traffic. Okay, the aircrafts. Then next is also a medium of communication. This is also a medium of communication. Yes, who can tell me? Anita saying yes sir, good evening. Evening बहुत पहले हो चुकी है. Yes, these are cell towers. Okay, tower. Okay, let's see what is it. This is a radio. This is a radio tower, of course. Whatever you are seeing here is a radio tower. So radio signals. Radio is the technology for communicating with radio waves. ये जो टावर्स है ना, ये क्या करते हैं, सपोज ऐसा कोई टावर है, ऑलराइट, ऐसा टावर है, दे यूज टू ट्रांसमिट रेडियो वेव्स। ऐसे वेव्स ये लोग सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। ओके, रेडियो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी यूजफुल ड्यूरिंग साइक्लोन्स। डू यू नो दैट ड्यूरिंग साइक्लोन्स all the other modes of transportation and communication, they break down. Okay, ना तो आप फोन से बात कर सकते हो, ना ही इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। ओके, सो इन दोज डेज व्हाट इज ऑफ यूज, रेडियो। People get to know about different things or different news through radio. Okay, radio is a very reliable source of communication even during different calamities. Okay, maybe earthquake, cyclone, or floods. Okay, very very important mode of communication. So friends, these are two important things that we had to discuss today. Okay, so let me remind you again. Let me just revise this thing. जो जो हमने डिस्कस किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके,
So what we discussed today, we discussed about two things. Number one was a mode of transportation. First one was a mode of transportation. याद करिए. I'm just fast forwarding it. Okay. This was the mode of transportation. फटाफट देख लेते हैं एक बार, रिवाइज भी कर लेते हैं. Yes, the first one was, if you remember, this was the first type of transportation. Number one was, okay, Bhavya is saying show some questions. Okay, see, I have not prepared any questions, but let me ask you questions. Okay, let me ask you question. I can ask you, of course. बताओ, question number one, which is the fastest mode of transportation? Which is the fastest mode of transportation? Yes, Bhavya answer. Yes, airways. Airways is the fastest mode of transportation. Question number one. All right. From the next session, I will give you questions. Okay. After discussing all these things, we will discuss the questions. Okay. Next, question number two. Question number two, you tell me which is the cheapest mode of transportation. Who can answer me? Which is the cheapest mode of transportation? Which is the cheapest mode of transportation? Yes. Which is the cheapest mode of transportation? Yes, Bhavya is saying ship. Basically waterways. Yes, waterways. Not only the ship, waterways. Yes. Yes, water transportation. All of you are correct. सुना है पूरा attentively आपने सुना है ना. Question number 3. Question number 3 का आंसर दीजिए. Which mode of transportation is used in the hilly areas? Which mode of transportation is used in the hilly areas? Hilly areas में कौन से mode of transportation को use करते हैं बताओ. Which mode of transportation is used in hilly areas? रोडवेज नहीं, वाटरवेज नहीं, एरोप्लेन, केबल कार. यस, केबल कार हो सकता है क्या? यस यस, एनी अदर आंसर? यस. हाँ, रोपवेज. यस, करेक्ट आंसर. आंसर क्या हो गया? रोपवेज. करेक्ट. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो. हु कैन टेल मी व्हाट आर दीज यूएवीज? यूएवी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ. ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे. हाँ, all of you gave the right answer. Vivek got the right answer. Then Rashmita is there. Ranjan is there. Yes. Tell me, UAV. UAV stands for what? Subhra is saying I am in doubt. Okay, Subhra, ask me. What is your doubt? UAV क्या है? Subhra, ask me the doubt. What are UAVs? Unmanned aerial vehicle. Yes, Madhushmita is right. Unmanned aerial vehicle. Yes, correct answer. Correct. Unmanned aerial vehicles. Okay. Railway is the cheapest way. Subhra is asking railways is the cheapest way. No, railways is not the cheapest way. It is the waterways. वाटरवेज में ना सबसे कम पैसे में आप जा सकते हो. ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर वाटरवे है नहीं. आप अगर कोलकाता जाओगे ना, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट. ऑलराइट, वाटरवेज में ना वो जो फ्रेट चार्जेस होते हैं या तो फेरी चार्जेस होते हैं, बहुत कम लगते हैं. ओके, तो यही सारा हम लोग डिस्कस कर रहे थे.
मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में फटाफट मैं बताते जाता हूँ। ऑलराइट, एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया था। ओके, हिली एरियाज में ये मैन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन और मैन पावर ट्रांसपोर्ट ये भी डिस्कस किया। देन वी टॉक्ड अबाउट द रेलवेज, correct, we talked about the railways, and we also saw that which when was the first railway introduced in India. Then we had the freeways, correct, we had the freeways. Okay. Then next one was the waterways. All right, this one the waterways. Okay, now here I want to ask you one question. Do you know there is a Suez Canal? Suez Canal. Suez Canal, yeah, this was opened in which year? In which year Suez Canal was opened? Suez Canal कौन से ईयर में ओपन हुआ था, ये थोड़ा मुझे बताइए आप। ऑलराइट, नेक्स्ट, दिस इज अ वाटरक्राफ्ट। यस, 1853 नहीं, 1869। 1869, अन्नपूर्णा इज राइट, 1869 सुएज कैनाल। 1869 इज दैट ईयर ना जहां पर गांधी जी का बर्थ ईयर है वो, 1869, करेक्ट। देन दिस इज अ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ओके, पाइपलाइन में गैस लिक्विड सारा हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव केबल कार। ओके, वैष्णो देवी में तो ये कॉमनली चलता है। देन इन नंदन कानन यू मस्ट हैव सीन इट। ओके, केबल ट्रांसपोर्ट। देन आई टोल्ड यू अबाउट दिस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये ना आज के डेट में ये यूज होते हैं कहाँ पर, मोस्टली वॉरफील्ड्स में। ओके, दे आर यूज टू अटैक ऑन एनिमीज। then you have the trams, the only tram service in India, that is in Kolkata, remember. Then this is a मैं नहीं बताऊंगा, बताओ ये क्या है। ये जो स्क्रीन में अभी दिख रहा है ये क्या है, व्हाट इज इट, याद करो। याद करो। यस, इट इज अ मैगलेव। सहर्ष इज राइट। यस, मधुचंद्रा इज ऑल्सो राइट, मैगलेव करेक्ट आंसर। हाँ हाँ, सुनंदा इज राइट। यस, यू सी दिस इज अ मैगलेव, बताया था मैंने आपको, दिस इज अ मैगलेव। ओके, अच्छा नेक्स्ट वाला बताओ ये क्या है, जस्ट रिमेंबर इट। यस, एनीवन टेल मी व्हाट इट इज। इट्स अ पॉड कार। यस यस, Pritish, Manoj, all of you, you're right, pod car। Okay, then the last one, this one is a pod car, the previous one was a pod car। yes, this is a personal rapid transit, जिसको ना hyperloop भी बोलते हैं, this is also a hyperloop। okay, ये तो हमने डिस्कस किया, करेक्ट। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फटाफट उसको भी देख लेते हैं एक बार। ऑलराइट, मीन्स ऑफ और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, I hope it is on your screen right now। Yes, so these are mode of communication। The first one, Alexander Graham Bell। Okay, he invented the telephone। Yes। Madhusmita is asking, can we have this topic on the site? Yes, of course, I'll upload the document, the PDF and the PPTs, not an issue at any absolutely not। Okay,
Yes, Mahesh, hello. I can see that. Okay. So this is a telephone, means of transport communication. Then this is a smartphone. We are all acquainted with the smartphones. है ना? आपको पता है ये WHO के guidelines क्या बोलती हैं? WHO, World Health Organization. I must tell you this thing. Okay, World Health Organization की गाइडलाइन बोलती है कि जो किड्स होते हैं ना, किड्स, दे मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम मोबाइल फोन्स. राइट, मतलब एक दिन में बहुत ज्यादा मोबाइल फोन आपको नहीं देखना है, याद रखना ये. इफ यू आर यूजिंग मोबाइल फोन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, देन यू रिड्यूस इट. देन ये होता है क्या, दिस इज अ टैबलेट कंप्यूटर, वी डिस्कस्ड इट. देन WHO, World Health Organization, yes, correct, Annapurna is right. Okay, then this is a television, we discussed it. आज के डेट में तो स्मार्ट टेलीविजन आते हैं ना, स्मार्ट टीवीज. ओके, then this one was a telegraph line, telegraphy. सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ओके, आपको पता है, ये एक बार चेक करो ये क्या है. ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है? स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है एलॉन मस्क का, ये क्या है एक बार चेक करना. एलॉन मस्क ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. क्या है ये? एलॉन मस्क. ओके, सैटेलाइट. देन दिस इज अ एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर. एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो एयरक्राफ्ट वगैरह जाती हैं इधर उधर, तो उनको ये मैनेज करते हैं. देन वी हैव रेडियो कम्युनिकेशन. ऑलराइट, यस. सो ये जो आई आस्क्ड यू व्हाट इज अ स्टारलिंक. स्टारलिंक इज अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, okay, managed by Elon Musk and company. Okay, so with this we have come to the end of this session, friends. This is the end of the session. All right, I hope you all got to know something about communication and transportation. मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके एरिया एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया. ऑलराइट, और नेक्स्ट क्लास जो टुमारो द क्लास, इट वुड बी स्पोकन इंग्लिश क्लास फ्रॉम 8:15 to 9:15 by our expert faculties. So do join that, or you'll get to know so many things. All right, चलिए. So from my side and from my टॉमी, बाय बाय. इसको गुड नाइट बोल दो. ये टॉमी दिख रहा होगा आपको, है ना? ये बार बार घुसता आ रहा है बीच में, ये पढ़ाई करने नहीं दे रहा है ना? इसको गुड नाइट बोल दो. मधुस्मिता, थैंक यू फॉर दैट. टुडेज क्लास इज एक्सेलेंट. थैंक यू फॉर दैट. ऑलराइट, टॉमी को गुड नाइट बोल दो. मुझे तो बोल ही दोगे, वरना टॉमी गुस्सा हो जाएगा. चलो बाय बाय. फिर से नेक्स्ट क्लास में टॉमी आ जाएगा, है ना? चलो, टॉमी ने बहुत कुछ सीखा आज, और आप लोगों ने भी सीखा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नहीं, चलो, गुड नाइट everybody, bye bye all. We will meet in the next class, all right, with a new topic, and yes, we'll talk about the MCQs, है ना? चलो, good night everybody, bye bye all.